we start the next part of coordinate geometry. First part we have already done. There are three important formulas which we'll be studying today. One is section formula, another is midpoint formula, and next is centroid formula. Section means a line which divides at a point. कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा वो 2:3, 1:2 in that form. Midpoint we all know, a point which divides the line into two equal parts, and centroid formula. Centroid formula is the point at which the vertices of a triangle meet. That is centroid formula. Now see the first example. If a point P divides a line segment with A -7, 4, B -6, -5 in the ratio of 7:2. Now ratio is given, that means we will be using section formula. So the points be, let the section point be x, y. So using the formula, first we find the x coordinate. The formula is mx2 plus nx1 upon m plus n, and that substitution is done. So you get the answer -56/9. Next, to find the y coordinate, again we use a formula for y coordinate. my2 plus ny1 is equal to, again substitution, 7 into -5 plus 2 into 4 upon 7/2, answer is -3. This how you get the section formula. So these will be the points of coordinate T using section formula. Now we go to the next example. If a point P -4, 6 divides the line segment AB with A some points and B some points in the ratio of 2:1. In this sum, there is one thing, they have given you the section formula. Means they have given you the point at which the line is divided. That section point is given, that ratio point is given. We need to find out the second point. So that section P, we considered -4 as x and 6 as y. And again we use the same formula, mx2 plus nx1. They have not shown the formula, but you should know. -6 is x, 10 x1, 10 is y1, r is x2, s is y2, and ratio 2:1. That m will be 2 and n will be 1. Again you substitute the coordinates in the proper formula, you will get the value of r and s. With x you get the value of r, that is equal to -3, and with s you get the value 4. So that will be the other point. Getting, now we go to the third problem. A 15, 5, B 9, 20, and A dash P dash B. That means P is a point of section. Okay, in which the point P 11, 15 divides the segment AB. Now the point is given 11 and 15, that means m and n we need to find out. Suppose the point P 11 and 15 divides segment AB in the ratio of m:n. Here we have to find out m:n. We are given everything. We are given x का वैल्यू x1, y1, x2, y2 and y. See, जो 15 है वो x1 होगा, जो 5 है वो y1 होगा, जो 9 है वो x2 होगा, जो 20 है वो y2 होगा. And p के coordinates 11, 15. P 11 will be x and 15 will be y. Now using that formula you get, again substitute only in one place. Either in m you substitute or n, x का कोऑर्डिनेट में सब्सटीट्यूट करो या फिर y के कोऑर्डिनेट में सब्सटीट्यूट करो, आपको एक रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा. नेक्स्ट, find the coordinates of point of trisection. See, this is trisection means a point which divides a line into 3 equal parts. Means अगर मेरा लाइन AB है तो उसमें एक कोऑर्डिनेट दिया P और एक को नाम दिया Q, तो क्या होगा AP, PQ एंड BQ. ऐसा 3 पार्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको ट्राइसेक्शन बोलते हैं. तो रेशियो क्या हो जाएगा उसका, 1, 1, 1, 3 बारी 1. तो जब हम लेंगे AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू Q भी दिया है, AP और PB का रेशियो लेंगे तो 1:2 हो जाएगा, क्योंकि AP 1 पार्ट है और PB में 2 पार्ट है. PQ और QB को प्लस करेंगे तो 2 पार्ट हो गया. इस तरह से रेशियो हमको मिलेगा 1:2. उधर प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया. अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं. सी, पॉइंट AB डिवाइड कर दिया 1:2 में, x कोऑर्डिनेट मिलेगा, y कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो AQ/QD अभी
उससे आपको एक्स एंड वाई ऑफ पी मिला ना। पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1, 0। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। क्यू फाइंड करने के लिए रेशियो होगा ए क्यू इज टू क्यू बी का। ओके, तो ए क्यू वापस 2 पार्ट हो जाएगा, 1 2, और लास्ट वाला क्यू जो है वो 1 पार्ट हो जाएगा। वो जो नीचे क्यू डी दिया ना मिस्टेक है, उधर क्यू बी आ जाएगा। सो पॉइंट क्यू डिवाइड्स द ए बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। पहले जो था वो 1:2 था क्योंकि ए पी एक पार्ट लिया था और पी बी बड़ा वाला पार्ट लिया था। अब ए क्यू बड़ा वाला पार्ट है और क्यू बी छोटा वाला पार्ट है, तो 2:1 उसके रेशियो से सॉल्व करेंगे तो आपको दूसरा इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स मिलेगा -4, 2। विद दिस यू गेट बोथ द ट्राइसेक्शन पॉइंट, दोनों मिल गया -1, 0 एंड -4, 2। Now we go on to exercise sums. First, find the centroid of the vertices of triangle -7, 6, 2, -2, 8, 5. Using the centroid formula, which is x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3. Substitute the values, you will get the answer 1, 3. Second question. Find the ratio in which point k, 7 divides the line segment joining A 8, 9 and B 1, 2. Also find k. Now here we have to first find the ratio using the section formula. So k means x coordinate. K is equal to mx1 plus ny1 upon m plus n. Now after doing that, we get an equation 7x plus 7 is equal to 2x plus 9. You got the value of x. Now substituting this value of x in equation, you get the value of k. Next, find the coordinates of midpoint of the segments joining 22, 20 and 0, 16. So the 2 points are A 22, 20, B 0, 16. Now we need to find out midpoint. So that the midpoints be x, y. Now using the formula, midpoint formula, x1 plus x2 upon 2, we get 22 plus 0 upon 2, that is 11, and for y we get y1 plus y2 upon 2, that is 20 plus 16 upon 2, that is 18. Next, find the coordinates of point P if P divides the line segment joining the points A -1, 7 and B 4, -3 in the ratio 2:3. Here ratio is given, that means m is to n is given. We need to find out the section point. So again using the section formula, mx1 plus ny1 upon m plus n, mx2 plus nx2 upon m plus n. और ये होमवर्क के फॉर्म सम्स है जो आपको करना है. थैंक यू.